Hello, my dear kids. I'm your English teacher Medhavi, and our today's chapter is Articles from your English grammar book. We already know that there are three articles a, an, and the. These are determiners used before nouns and sometimes before adjectives. There are two types of articles. The first one is indefinite articles that includes a and n, and second one is definite article that is the. A and n are used before singular countable nouns, and we use the or the to indicate the things we are already aware of. Yesterday I told you about the pronunciation of the. When do we pronounce it the? Yes, whenever we are using the before a noun that is starting with e or any vowel, so we use it as the. For example, the end. A comes before singular nouns that begin with a consonant sound. Excluding a, e, I, o and u, all the letters of English alphabets are consonant. N comes before singular nouns that begin with a vowel sound or a mute H. Sometimes the children get confused that if the a word or a noun is starting with a, e, I, o, u, so we should use a, n before that. But we have to keep in mind that no matter what the spelling getting start from, the sound should be of vowel, right? The beginning sound, the first sound of the word should be of vowel. The is definite article used to point out a noun or indicate a noun that we already know. We use the when a person, place, animal or thing is mentioned a second time or after that. Means we have already talked about that person, place, animal or thing, or we already know about that person, place, animal or thing, and we are mentioning it again, so we use the to indicate it. For example, we have a test tomorrow. Tomorrow we have a test. That I'm telling you for the very first time. We have a test tomorrow. The children, we have a test tomorrow. And you have to do well in the test. Which test? That we have tomorrow. हमने उस टेस्ट के बारे में पहले बात कर ली है. I've told you that you have a test tomorrow. And next time when I'm using a reference of the same test, so I'm using the before that. Let's look at another example. We had two glass jars, a red one and an amber one. A red consonant sound है, ठीक है, और हम पहली बार इन दोनों jars के बारे में बात कर रहे हैं. So we had two glass jars. The first one is a red one. Red consonant sound है, and an amber one. Amber color जो आपका हल्का orangish color लिए होता है. Amber, amber, तो vowel sound आ रही है. So we have used and before that. अब हम दोबारा उस amber jar के बारे में बात कर रहे हैं. So we already know that which jar are we talking about. So it will be the amber jar was very expensive. I hope you understood. पहले हमें इन दोनों glass jars के बारे में नहीं पता था. तो I told you we had two glass jars, a red one and an amber one. Now we know that we had a red jar and an amber jar. So the amber jar that we had was very expensive. The amber jar was very expensive. क्योंकि अब यहाँ पर हम किसी strange amber jar के बारे में बात नहीं कर रहे. We are talking about the jar जो हमारे पास था. Some more uses of a and n. A and n are used to indicate one person or thing. A little puppy was following me down the street. To show a kind, a class or a species, like
I have a money plant at home. To show a certain quantity, Rajat ate a dozen bananas. A dozen. भले अगर हम डजन को काउंट करें तो वहां पर 12 बनानाज होते हैं, लेकिन हम एक ही क्वांटिटी है जो डजन है, एक दर्जन केले दे दो भैया बोलते हैं ना. सो a dozen bananas. We use a or an to show profession, rank, caste, community or religion of a person. Like, he's a banker, he's a professor, he's an artist. Shirley is a Christian. Uses of the before any noun when we want to make it particular. I met the doctor who treated me. I met the doctor. Which doctor? Who treated me. हम particular उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया. I did not write I met a doctor. I met a doctor मतलब मैं एक डॉक्टर से मिली. That doctor can be any random doctor. But when I said I met the doctor who treated me, it means मैं उस डॉक्टर से मिली जिसने मेरा इलाज किया था. We use the before superlative degrees. Like, Shreya is the brightest girl in the class. I am the shortest in my family. Venus is the hottest planet. She is the most beautiful princess. And so on. We use the before words like first, last, next, only, etc. Karan was the first to join the class today. It is the last chapter of the story. Who is the next? It is the only money left with me. We use the before a common noun when that noun represents the whole class. For example, the tiger belongs to the cat family. The tiger. वो जो टाइगर है वो पूरी कैट फैमिली से बिलोंग करता है. अगर मैं ये बोलूँ I saw a tiger in the cage तो वो ठीक होगा. बट द टाइगर, जो टाइगर यानी कि हम किसी एक टाइगर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. द एंटायर कम्युनिटी ऑफ टाइगर्स, जितने भी टाइगर्स हैं. द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली. वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. यूनिक थिंग्स मतलब जो अपने आप में एक है. इसीलिए हम कभी कभी जब बहुत ज़्यादा तारीफ करनी हो तो जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स या आर्टिस्ट होते हैं उनके नाम के आगे भी दी लगा देते हैं. लाइक दी लता मंगेशकर, जबकि लता मंगेशकर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन वी से द लता मंगेशकर क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिक सिंगर है. उनके जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा. राइट. द सन, द मून, द स्काई, ये अपने आप में सिर्फ एक है. जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स. जियोग्राफिकल, एक तो प्रॉपर नाउन में हम नहीं लगाते कभी भी कोई भी आर्टिकल, लेकिन अगर जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन है लाइक द हिमालयाज, द थेम्स, द गैंजेस, द एल्प्स, द माउंटेन एवरेस्ट एंड सो ऑन. होली और ग्रेट बुक्स, जो बहुत फेमस बुक्स होती हैं, जो पवित्र किताबें होती हैं लाइक द रामायणा, द कुरान, द बाइबल. बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, वेल नोन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, द डायरेक्शंस, इन सब के पहले हम लोग द लगाते हैं. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स यू आर फ्री टू डू दैट. द होल फैमिलीज, अगर हम पूरी फैमिलीज की बात करें लाइक द कपूर्स. द कपूर्स मतलब उनकी पूरी फैमिली या उनका पूरा खानदान. द खन्नाज, द अरोराज. वी यूज द बिफोर द लैंडमार्क्स ऑल्सो. लैंडमार्क समझते हो? लैंडमार्क्स मीन्स लैंडमार्क जो होते हैं मतलब आप कहीं रहते हो या कोई जगह को इंडिकेट करने के लिए उसके आसपास का जो एरिया होता है. ओके. लाइक आई लिव नियर द टेलीफोन एक्सचेंज. ओके. ज्योति लिव्स नियर द BD कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन. Articles are not used. Remember, we are not supposed to use the articles and at the following places before proper nouns. जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ये नहीं कह सकते कि द करिश्मा हैज कंप्लीटेड हर वर्क, द मेधावी टॉट यू इंग्लिश लास्ट वीक. ओके. बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द फ्रेंडशिप, द लव, द केयर, द काइंडनेस, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स देयर. बिफोर मटीरियल नाउन्स लाइक आपका गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, शुगर है, ये जो मटीरियल नाउन्स है इनके पहले हम द नहीं लगाते या ए और एन नहीं लगाते. कब तक? जब तक हमें उसको स्पेसिफाई ना करना हो. लाइक हम द वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस नहीं कह सकते.
वी कैन से वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. लेकिन अगर मैं बोलूँ गिव मी द वाटर विच इज केप्ट इन द जग, तो मैं स्पेसिफिकली उस पानी की बात कर रही हूँ जो जग में रखा है. दैट टाइम वी कैन यूज टी एच ई द देयर, लेकिन वहाँ पर फिर भी अ और एन हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन, इंग्लिश इज जस्ट टोटली द गेम ऑफ प्रैक्टिस. As much you speak, as much you write, as much you read, you'll learn more and more and more. That is it for today. Just take care of yourself and your family. Of course, ठंड शुरू हो गई है, अपना ख्याल रखना. I'll see you soon with another video. Till then, keep studying, keep shining. Thank you.